Hello student, welcome to Vidyanest for this revision and doubt solving session. Few sums which is at par with JEE advanced, JEE level. Few simple sum because देखो simple sum करने के बाद ही tough sum में reach करना easy होगा. तो ऐसे एक sum दिया है, ये इतना tough नहीं है जो देखने में लगता है. यहाँ पे बोला कि sin 70 cot 10 cot 70 minus 1. Let's see how to defend this. जब हमारा पास में कोई आंसर नहीं होगा और कोई हमारा आईक्यू कम नहीं करेगा तब हम ये सम में ये जो कॉट है इसको कॉस साइन में तो ब्रेक कर दूंगा. देखो ऐसे ये जो कॉट 10 जो है इसको हम कॉस बाय साइन में ब्रेक कर दिया. कॉट 70 इसको भी -1. ठीक है. नाउ we have nothing but to take the LCM of it and we will get what? Cos 10 cos 70 minus sin 10 sin 70. डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा. Now, numerator part reminds me what? ये cos A cos B minus sin A sin B. तो क्या है फॉर्मूला? cos A cos B minus sin A sin B. याद करो. We know cos A cos B minus sin A sin B ये होगा cos A plus B. So here that thing will be applicable. Cos A cos B minus sin A sin B. Obviously the bigger angle will be considered as A, smaller as B. So you write cos A plus B and denominator sin 10 sin 70. Now what can I cancel from numerator and denominator? It is clearly visible that this part and this part will get cancelled. What will be left for you? Sin 10. Yes, cos 80 by cos 80 by sin 10. Now that will remind you in your junior classes complementary angle. Cos theta means sin 90 minus theta. So instead of cos 80, if you wish, you can write sin 10. Why? Because cos 80 means cos 90 minus 10, that is sin 10. So sin 10 by sin 10. Cancel 1. Now let's see, does it match with any option given? Option 1. Okay? Okay, sir. So it is not that much of tough. Let's do
Let's see the next one. Next one is also modest. Next one is also demands, you see, straight approach. Clearly visible. The numerator will remind you the formula of cos C plus cos D. Denominator sin C minus sin D. Here, one thing plus, not clearly visible. Sin C plus sin D, cos C minus cos D. Okay. Now let's start with straight approach of the formula cos C plus cos D, sin C minus sin D, sin C plus sin D, cos C minus cos D. See, first of all, cos A plus cos B. That will give us 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2. So instead of cos A plus cos B, you can write that. Sin A minus sin B, 2 sin A minus B by 2 cos A plus B by 2 or to the power n. So instead of this, I have written this. Now this thing will be simplified. See, Yes. sin C plus sin D. 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. And denominator cos C minus cos D. Maximum students get confused in using this formula. In case of cos C minus cos D, always remember the ratio will be converted into sine. 2 sine A plus B by 2 sine B minus A by 2 whole to the power n. So that is the preliminary steps to be required. Now we will observe what part we can cancel. See, it is clearly visible here 2 and 2 cancel. And any other thing? Yes, we can cancel this thing as well as that thing. And let's see. Yes. Hope you can get it. Let's see what is left for us. Cos by sine. Cos by sine. Cot A minus B by 2. And here, one problem students are facing. Here A minus B but B minus A. So, from sine, we know the basic rule of sine. Sine of minus theta is minus sine theta. So, I can take out one minus from here and we will get minus cot A minus B by 2. See, now two things can happen. If n is even, this minus will be observed, and if n is odd, minus will remain and these two term will get cancelled. अगर both दोनों जो exponent है अगर even हो जाए
यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? एग्जाम्पल लो, सपोज -1 होल स्क्वायर, ये तो +1 है ना, तो माइनस अगर ये इवन पावर है तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा बीच में, अगर ये ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। सो दोनों पॉसिबिलिटीज का ऑकरेंस हो सकता है। तो विल टेक इन दिस वे, इफ n is even, this thing will remain same, this part will remain same, and in this part minus will be absorbed. So we will get 2 cot to the power n. Okay, got it up to this stage? Yes, sir, got it. Very good. Now अगर Yes, odd, sir. हाँ ठीक है ना, now अगर ये odd हो जाए, if n is odd, तब दिस पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, but in that part minus will be brought out, like -1 whole cube, power odd है, so -1 whole cube minus will exist, I can bring minus out, so ये माइनस बाहर हो जाएगा, सो 2 पार्ट कैंसिल होके आंसर 0 देगा। नाउ यू हैव गॉट 2 आंसर फॉर 2 केसेस एंड सी यू मैच विद द given option. See, if n is even, I have got already that option, so 0, that is not valid. If n is odd, not valid. If n is odd, that is C, not valid. Option A correct. Got this sum? Yes, I got it. Now let us do one sum regarding domain. Domain, just see at a glance. Domain of the function. What is domain? Domain means the set of independent variable where function is defined. Here 2 cases will arise, and in this type of sum, what to be remembered, that if you get any term under root, always you examine the existence of the function. Means under root nothing will be lesser than 0, and here in this case you can get the function under root can be equal to 0, but here you can't take. Why? Because 1/0 will be undefined. So 2 things will be applied here. One, for the first, here it is the junction of 2 function. One is √4 minus x, another is 1/√x square minus 1. Junction of 2 function. It is the conjunction of 2 function. So 2 things to be remembered. For here, the function to be defined, for that 2 cases will arise to be defined.
that 4 minus x must be greater than equal to 0. Why? Because under root any negative term cannot exist. Here under root equal to we can get. So from here, what conclusion I can draw? 4 greater than equal to x or x less than equal to 4. Now, will the same logic be applicable for the next function? No. Why? Because it is in reciprocal form. So equal to 0 to be omitted. So this x square minus 1 strictly greater than 0. X square minus 1 strictly greater than 0 means what? X plus 1, x minus 1. Now put it on number line. Number line, you put both the cases on number line and see the outcome. See, that is number line. What points are visible? If I make this thing equal to 0, then x is equal to 1. If I make this factor is equal to 0, x is equal to minus 1. If I make this factor is equal to 0, x is equal to 4. Now, for this inequality, I will choose one arbitrary value between minus 1 and plus 1. And if for that value that inequality holds, अगर वो वैल्यू के लिए अगर ये इनइक्वालिटी वैलिड हो जाए तो -1 और +1 का बीच में सब वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा. देखो एक चूज करो, 0 पुट करो यहाँ पे, इसका जो वैल्यू है 0, 0 + 1 क्या होगा 1, 0 - 1 -1, तो यह +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ गया. 1 × -1 -1, -1 तो 1 से 0 नहीं हो सकता है. तो एनी वैल्यू अगर -1 और 1 का जो इंटरवल है उसका बीच में इफ आई टेक, दैट विल नेवर सेटिस्फाई दिस ग्रेटर देन 0 कंडीशन. सो इसका बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा. कहाँ होगा 1 वैलिड है नहीं, क्यों? अगर 1 पुट करूं तो 0 आ जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड. तो 1 से ज्यादा और -1 से कम ये इंटरवल. तो ये इनइक्वेशन से ये इंटरवल मिला. बट ये जो इक्वेशन है इसको भी तो लेना होगा. कैसे? हाँ देखो x लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ पे 4 इंक्लूडेड होगा. क्यों? अगर हम x के जगह में 4 पुट करो, यहाँ पे √0 आएगा. √0 तो वैलिड है, √0 वैलिड. सो करो, ये सम चला गया. √0 तो वैलिड. सो क्या होगा? हम if I wish I can put 4 also. So less than equal to 4. So से छोटा. तो यहाँ पे -∞ to -1, -1 इंक्लूडेड नहीं होगा और 1 वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा और 4 इंक्लूडेड होगा. देखो ये जो आंसर है किसी के साथ आएगा कि नहीं आएगा. देखो यहाँ पे तो वो क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट. शायद ये ऑप्शन ए होगा. एक मिनट, क्वेश्चन विजिबल नहीं है. ऑप्शन ए, ठीक है.
ओके सर, ठीक है। जो प्रीवियस जो सम हो, अभी तक जो सम किया है, तो यू नो manageable sum. Right now, this sum which is visible looked very gigantic, but not actually so. It came in JEE Advanced 2016. 2016 JEE Advanced क्वेश्चन को सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है, बट एक्चुअली ये टफ नहीं है। देखने में जितना टफ है, इसमें इतना टफनेस नहीं है। होप द क्वेश्चन इज विजिबल। ठीक है, इज इट Yes, विजिबल? yes, sir, it's visible. देखो, यहां पे बोला कि ये के 1 to 13 और एक समेशन साइन दिया। In when I taught you the trigonometrical part, the video is there in YouTube. You got this type of sum. The trick which was followed is called in modern math telescopic method. Telescopic method क्या है? ये जो term है, that term will be expressed as the difference of two terms. ऐसे होगा जैसे टर्म कैंसिल होते जाएगा, तो ये एक सिंपल शेप लेगा। अभी तक तो कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है। तो इसका ट्रिक क्या है? व्हाट ट्रिक? इफ यू गेट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन एग्जाम, 1 by sin anything, sin of this into sin of this, if you get, or cos of this into cos of this, whatever be, it will be only confined in case of sin and cos. Then what trick to be followed? In that case, you have to take the difference of the angle of both sides. It is so simple. Let us find the difference of angle of both sine ratio. See, let's follow the trick. See, one angle is this, another angle is this. Let us find the difference. Pi by 4 plus k pi by 6 minus pi by 4 plus so that is the difference between the two angles of two sine ratio of the given sum. Now what is our role? Remove the brackets. It is a colorful sum really, so different color is being used. देखो, ये ब्रैकेट तोड़ो, क्या क्या मिलेगा? क्या रहेगा तुम्हारे लिए? ठीक है, तो Yes, sir. अभी तक जो स्टेप किया है, कोई टफनेस नहीं है। टफनेस इज प्लाउड इन माइंड। ठीक है, टफनेस जो है वो इम्पोज्ड है, एक्चुअली टफ नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टर्म कैंसिल हो गया, इसको भी तोड़ो, रिमूव द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, सो ये भी कैंसिल हो गया एंड एट द एंड
I will get the difference of two angles of two sine ratio is pi by 6. Yes or no? Yes, sir. Now, how to proceed? देखो ये जो सम k 1 to 13, it is JEE advanced level sum, nail biting sum, but we will make it simpler. Okay, so dilute, that is our role, huh? That is the challenge. 1 by sin जो है उसको फिर लिखो, ये है मेन सम. Now what we have observed, difference of the angle of this both the sine is pi by 6. So our step will be, we will introduce sine pi by 6 in numerator as well as denominator. This is the trick plays behind the screen in this sum. Obviously, plays behind the screen means in subconscious mind, but you are seeing it on the screen. Now, other part will remain unchanged. See, ये देखो, तुम हमको पूछ सकते हो कि अगर यहाँ पे साइन साइन का कॉस दे दिया जाए तब हम कॉस पाई बाई 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, तब भी साइन. अगर ये साइन दोनों ही साइन है, एक साइन एक कॉस, दोनों ही कॉस, जो ट्रिक वो विल बी रिमेन फिक्स फॉर ईच केस. नाउ ये जो डिनोमिनेटर का जो साइन पाई बाई 6, इसके जगह में हम इसका वैल्यू जो तुम क्लास 10 में किया था और 9 में किया था, हाफ साइन 30 हाफ, वो हाफ हम पुट कर दूंगा. यहां पे हम हाफ पुट कर दिया. अदर जो पार्ट है जैसे जैसे है हम ऐसे लिख दिया, कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है साइन 30 के जगह में हम क्या पुट किया? हाफ. और ये जो पार्ट है ये ऐसे ही अनचेंज रह गया. ठीक है कि नहीं? हाँ सर. तुम पूछ सकते हो तो डिनोमिनेटर का हालत क्या होगा? डिनोमिनेटर की ऐसे ही रहेगा और उसका चेंज आएगा. क्या क्या चेंज? देखो, साइन तो साइन ही रहेगा, बट ये पाई बाई 6 के जगह में हम ये पुट करूंगा जो हमको मिला था. क्या मिला था? पाई बाई 6 है क्या? ये जो डिफरेंस, ये सर नहीं, ये सर नो, Yes, sir.
पाई/6 के जगह में हम वो पुट कर दूंगा. हाँ, लेट्स पुट. क्या था? दिस माइनस दिस, पाई/4 प्लस k/6 माइनस. अच्छा, ये थोड़ा अनटाइडी हो रहा है, एक मिनट. और that is pi/6 means this minus this. आप पुट कर दिया. ठीक है, बोलो, ये स्टेप तक कोई प्रॉब्लम हुआ? No problem. हाँ, यही है मेन स्टेप. ठीक है, हम पहले वो साम देख के घबराहट आ गया था कि जेई एडवांस 2016 टॉप मोस्ट ईयर फॉर द स्टूडेंट. इसके बाद हमको देखा कि हाँ, ये ओके, ये जो दोनों एंगल जो है उसका डिफरेंस एक सिंपल है पाई/6. तो हम वो ट्रिक को याद रखूंगा. अगर दोनों साइन का प्रोडक्ट है और कॉस का प्रोडक्ट है और साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, इन ईच केस आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल. इन डिनोमिनेटर जो है साइन पाई/6 की जगह में 1 पुट कर दिया और पाई/6 की जगह में वो जो एंगल का डिफरेंस है वो डिफरेंस पुट कर दिया. The sum has, is seeing some glimpse of light. We are seeing some glimpse of light to make the end of it. Now ये जो half है 1/1/2, ये तो 2 होके बाहर चला गया, समेशन ऐसे ही रह गया. नाउ बोलो, ये जो पार्ट है अगर इसको तुम इनवर्डली ए और इसको तुम बी पकड़ लिया तो व्हाट फॉर्मूला विल बी रिमाइंडेड? साइन ए माइनस बी. ठीक है, ये है ए, ये है बी. ये सर नो? Yes, sir. So expand it with sin a minus b. So sin minus b is not at all the level of JEE advance of this. It is basic level. So sum is actually referring the knowledge of basic level. You consume the knowledge of basic level, easily you can defend that high level, so-called imposed high level. Okay, let's expand it. Sin a cos b. Sin a cos b minus cos a sin b. Sin a cos b minus cos a sin b. डिनोमिनेटर में जो है वो इंटैक्ट रह गया. ठीक है, इज इट क्लियरली विजिबल? Yes, sir. वेरी गुड. सो डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो ऐसे ही इंटैक्ट रह जाएगा. क्या
sine of pi by 4 sine of now we will split. कैसे split होगा? तुम just recall your memory of class 7, like no a minus b by c. क्लास 7 ने कैसे स्प्लिट करते थे? a by c minus b by c. So take it, you know, this thing, that so-called gigantic figure in simpler manner. That is a, that is b, that is c. a by c minus b by c. Yes or no? a by c. ये जो टोटल पार्ट है ये है Yes. a by c minus b by c. ठीक है? हाँ Good. So देखो split, I'm going to split now. Two this by this, sine pi by 4 plus k pi by 6 cos pi by 4 plus k minus 1 pi by 6 divided by sine pi by 4 k minus 1 by pi by 6 sine pi by 4 plus k pi by 6 minus this by this thing by this cos pi by 4 k pi by 6 sine pi by 4 plus k minus 1 pi by 6 divided by sine pi by 4 plus k pi by 6. So what simplification is waiting for us? In open I, which term to be cancelled? This part will be cancelled. And here, which part? That part. What will be left? Cos by sine, cot. K 1 to 13 cot and here also cot. Understand? So we are able to express the whole expression as the difference of two trigonometric terms consecutive. Yes or no? Why consecutive? You see, pi by 4 k pi by 6, pi by 4 k minus 1 pi by 6. So pi by 4 is common to both the angle. Here two consecutive term k minus 1. Yes or no? Yes, sir. Now I will keep on putting from 1 to 13, and those who have attended my class earlier or those who have had the idea already, in case of telescope, if I keep on putting from 1 to 13, all terms will get cancelled but the first and last term. All terms cancel हो जाएगा first और last को छोड़ के. देखो कैसे?
पहले 1 पुट करो, इफ आई पुट 1 ये तो 0 हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 ये तो 0, वहां पे कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, तो 1 पुट करके ये मिला। नाउ ये तो सिग्मा समेशन साइन है, इसके बाद 2 पुट करो, 2 पुट किया, 2 अगर पुट किया तो क्या आएगा, कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6, ऐसे पुट करते जाओ। लास्ट टर्म क्या है, 3 भी पुट करो तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए, 3 पुट करो, 3 अगर पुट किया तो देखो कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 6 dot 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 means the series is on and it will last at which point, 13. So put 13, 13 put करो, cot pi by 4 plus 12 pi by 6 minus cot pi by 4 plus 13 pi by 6। शुरू में तुम एक काम करोगे कि ऐसे पुट करते जाओ, तुम्हारा एक आइडिया आ जाएगा कैसे सेकेंड टर्म का फर्स्ट कंपोनेंट प्रीवियस टर्म का सेकेंड कंपोनेंट से कैंसिल हो रहा है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट देखो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो बट वंस यू गेट द ग्रिप ऑन इट यू डायरेक्टली राइट द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, बिकॉज इसका प्रीवियस टर्म ऐसे ही होगा कि cot पाई बाई 4 प्लस 11 पाई बाई 6 minus cot pi by 4 plus 12 pi by 6. All term will get cancelled except the last and first one. So that is the utility of telescopic method. Twice cot pi by 4 minus cot pi by 4 plus 13 pi by 6. So it has become a simple expression, cot pi by 4 you know, and this thing to be simplified. See, cot pi by 4's value you know, that is 1, and here LCM cot 4 and 6 LCM 12, you will get 29 pi by 12 cot. Now simple use of trigonometry of board level, कैसे, 1 minus cot, that will give you 2 pi plus 5 pi by 12. 2 pi by 5 pi by 12 means lies in the first quadrant. Cot 5 pi by 12 means 75 degree, means cot 75 and tan for 15 are same. Tan 15 to you know, tan for 15 means 1 minus tan 45 minus 30. So tan A minus B is basic rule. See, the whole sum is depending on the basic rule and the sigma. Okay. Tan A minus tan B 1 plus tan A tan B. So tan 45 to 1, ये 1 minus 1 by root 3, 1 plus 1 by root 3.
we are in the verge of conclusion. Let's see, the simplification stands where? Root 3 minus 1, root 3 plus 1. So, shall I keep the sum or leave the sum at this stage, or let us take the LCM of this? Let's see. Let us take the LCM and see where does it terminate. Okay, and at the end we'll check that which answer it is matching. Root 3 plus 1, 2 by root 3 plus 1. So maximum simplification I think is done. Now you know better, you are taught rational irrational concept in junior class in 9th, irrespective of any board. You multiply root 3 minus 1 in numerator and denominator. So that will give you 4 by 2. So cancel it. Let's see if any option is given of such type or not. See, option C is correct. Okay. Understand?